हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन की यारी। आज हम डिस्क्रीट सीरीज डेटा से मीन डेविएशन फ्रॉम मीन फाइंड आउट करेंगे। इन डिस्क्रीट सीरीज मीन डेविएशन फ्रॉम मीन को डिटरमाइन करने का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ इनटू डी एक्स बार डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज एन। डी एक्स बार कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एक्स माइनस एक्स बार एंड एक्स बार दैट इज मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है summation of fx divided by n. In the given series, firstly we find out mean. Therefore, mean is equal to summation of fx, that is 11995, divided by number of observation 195, is equal to 61.51. Now we calculate f into dx bar by ignoring the minus sign, and we get the summation of f into dx bar is equal to 338.617. Now put this value mean deviation from mean formula. Therefore, summation of f into dx bar is equal to 338.617 divided by number of observation 195, and finally we get the mean deviation from mean is equal to 1.736. आई होप आपको डिस्क्रीट से डेटा से मीन डिविएशन फ्रॉम मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये क्लियर है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानने के लिए अपने एजुकेशन की यारी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।